हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैमरा के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A camera is an optical instrument that captures a visual image. At a basic level, cameras consist of sealed boxes, the camera body with a small hole, the aperture that allows light through to capture an image on a light sensitive surface, usually a digital sensor or photographic film. Cameras have various mechanisms to control how the light falls onto the light sensitive surface. Lenses focus the light entering the camera. The aperture can be narrowed or widened. A shutter mechanism determines the amount of time the photosensitive surface is exposed to light. Leica camera 1950s Hasselblad 500 cm C/m with Jesus lens. The still image camera is the main instrument in the art of photography. Captured images may be reproduced later as part of the process of photography, digital imaging, or photographic printing. Similar artistic fields in the moving image camera domain are film, videography, and cinematography. The word camera comes from camera obscura, the Latin name of the original device for projecting an image onto a flat surface. The modern photographic camera evolved from the camera obscura. The first permanent photograph was made in 1825 by Joseph Niepce.